In this lecture, we are going to discuss another part of how we compare. In the last lectures, we had discussed in details about why we compare. So let's look at this question after understanding why. Okay. So those who are new, you must revisit our previous lectures on why we compare and the 4 reasons that we had discussed in details. So in this lecture, we are going to focus on this question of how we compare or how to compare. Remember, in comparative politics, there is a method to compare, or for that matter, in any kind of comparison. Our mind is trained or intuitively trained to compare based on certain methods, based on certain criteria or classification. For instance, you cannot compare apple with oranges or mangoes with grapes. You can compare 2 apples, you can compare 2 oranges. Similarly, you cannot compare 2 very distinct and odd entities. Okay? You cannot compare monkeys with, say, lions. In the similar vein, when we compare in politics, you must keep in mind that the comparison should be of, or the things that we are comparing or the entities that we are comparing should be of the same nature. Okay, they should be same objects. Okay? There should be something to compare at least, right? So the question is that how we compare. Okay? So we compare based on certain methods. We compare based on certain tools. There will be techniques to compare. Okay? And when we compare, there must be certain kinds of approaches, framework, methods, right? So framework and approaches to look at a thing or at a phenomena. So these 5 things you must keep in mind. But at the very outset or at the very beginning, you must keep in mind that only likes can be compared. Okay? There is a famous definition of equality by Aristotle, which says equal should be treated equally, unequal should be treated unequally, and that is what equality is for Aristotle. Obviously, there are limitations to these definitions and criticisms as well, but at least in comparative politics, likes should be treated or likes should be compared. The nature, scope, and the entities that we are comparing must be of a like nature. Okay, just I said that it's not possible to compare, say, a scientist contribution to the nation with that of a teacher's contribution, or a farmer's contribution to the nation to that of a politician's comparison. Their contribution in their individual capacity is immensely significant. And we know this when we just evaluate their contribution as an individual, as an entity. So there are no same units of analysis, right? So how are you going to possibly compare that what a scientist contributed and what a farmer contributed? How are you going to, what would be the parameters to, say, compare these two? Which was who contributed the most or who contributed the less? What would be the parameters? Possibly there won't be any parameters. All right, how can you say whether a Chandrayaan is more important or say food grains are more important? Okay, they both have their significance for or in a nation building. Okay, so these 2 things are alike
or not alike in nature, and therefore it's not possible to compare. Similarly, when we compare political system or when we study political system, we must look for certain parameters, certain criteria, certain features which makes them alike, एक जैसा बनाता है. Okay, therefore you will see that we compare two political systems, and that two of two different countries which have certain features or which have certain similar features. For instance, we compare, say, how the Parliament of Britain functions as compared to, say, Parliament in India. Okay, so we are comparing the functioning of a Parliament of Britain in India. We compare the judiciary of, say, United States and India. We compare the federal system, center-state relations of India with that of Canada or that of United States. We compare the political parties and party systems of India with that of Israel or UK. Alright? So we compare these aspects because there are, or the units of analysis are same. Okay? So in all these countries, government is elected by the people. There are democracy, there are elections, there are units, the units of analysis is same, and therefore how you compare is you must keep in mind that unit of analysis is similar. Okay, as I said. And what are these units of analysis in comparative politics? So this unit of analysis is very peculiar for political science or in political comparative politics, because when you begin to say compare, and remember, in comparative politics, it is not necessary that we compare the entire country or two different countries. We just pick up one aspect of a political system and compare. Not essentially compare, we just want to know. Okay, and therefore it's not essential, or no comparative politics will say compare the entire political system of US or India or Britain or Germany or France. It will just pick up one smaller, a very narrow, a very pointed aspect of it, that how political parties functions in India and Britain, how the higher judiciary function in India and United States, what role does federalism play in governance of India and Canada. Okay, we are just picking up one simple node of federal structure, parties, judiciary, parliament. Okay, a simple node of, say, executive or committees. Okay, so we focus on a very narrow aspect and we enlarge it. We keep those aspects within a microscope. Okay, तो जैसे माइक्रोस्कोप की मदद से हम बहुत छोटे सी चीज़ों को देख सकते हैं, वैसे ही हम एक छोटे से एस्पेक्ट, एक पॉलिटिकल सिस्टम का या एक पॉलिटिकल सिस्टम से एक छोटा सा एस्पेक्ट्स उठाते हैं और उसको हम एनलार्जन करते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोप से देखते हैं. राइट, उसे ही हम टूल्स एंड टेक्निक्स कहते हैं. उसमें हम कुछ मेथड्स लगाते हैं. We study approaches, we apply approaches to study those functions, right? And that is how we compare. Okay, so units of analysis should be same, right? So agar you are trying to understand, say, how parties work in elections. Okay, so few things must be clear, that वहाँ elections होने चाहिए, free and fair होना चाहिए, impartial constitutional body होनी चाहिए जो election conduct करवाती है, लोगों का trust होना चाहिए उस election system में, और उसके साथ साथ parties भी होने चाहिए, at least एक से ज़्यादा तो चाहिए ही. Okay? At least it should be a two-party system. Then only you will be able to understand, say, parties, how parties work in an election. So unit of analysis is same here, right? Similarly, suppose you are working on, say, how
or how legislature or legislature's role in policy making. ऑलराइट, अगर आपको ये पढ़ना है, सो यूनिट ऑफ एनालिसिस सेम जब तक नहीं रहेगा, हाउ आर यू गोइंग टू स्टडी दिस? मतलब लेजिस्लेचर तो होना चाहिए, उसके कुछ रोल्स भी होने चाहिए, सच एज सो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट। तो आप वैसे ही देश को कंपेयर कर सकते हैं या फिर वैसे ही पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर कर सकते हैं जहाँ पार्लियामेंट हो और वो पार्लियामेंट इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, लोग इलेक्शन के थ्रू पार्लियामेंट को चुनते हैं, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, राइट? एंड देयरफॉर only this thing ensure that unit of analysis remains the same. Okay, for instance आप कहते हो 1 kg of something, 1 kg of potato, 1 kg of tomato, ये जो 1 kg है, it clearly conveys certain message to you. इसका ये मतलब नहीं है कि 1 kg का दिल्ली में कुछ और मतलब है और जयपुर में कुछ और मतलब है, okay? या फिर इंडिया में कुछ और मतलब है और जर्मनी में कुछ और मतलब है. इट वेरी क्लियरली स्टेट्स दैट 1 kg equals to 1000 grams and it will remain so. 1 liter equals to this much of grams and it will remain so. So this is the unit of analysis, because unit of analysis is very essential to arrive at certainty. Okay, so how we compare? We compare keeping in view that the unit of analysis is same, because when unit of analysis is same, there is certainty in our understanding, okay, certainty in our comparison, certainty in our methods, okay, then we can go ahead to choose the tools and techniques of comparison. So we will arrive at these questions, but at the moment keep in mind that unit of analysis should be common in one kind of obviously comparison. Okay, so आपके एक क्वेश्चन पार्टीज को पढ़ना है, आपको लेजिस्लेचर पढ़ना है, आपको जुडिशरी पढ़ना है, आपको डेमोक्रेसी पढ़ना है, आपको किसी देश का पॉलिटिकल कल्चर पढ़ना है, उस स्टडी में यूनिट ऑफ एनालिसिस सेम होनी चाहिए. ओके, दो स्केल्स नहीं होनी चाहिए. There should only be one yardstick to judge, to study. There should also be cases, right? Cases as in there should be something to study. What are you going to study? You are going to say study the evolution of legislature or parliament in India, right? So this India, you are going to study how the, say, center state relation evolved in, say, Canada. Okay, how parties evolved in USA. So these becomes your cases. Okay, so you are doing, so you have a case study जिसको कहते हैं. Alright, in later part of our lecture we will see there can be many various cases, there can be one case, just one case, there can be few cases, and there can be multiple or many cases. Alright, but there should be some cases to begin with. For instance, in the previous lecture I have said that Aristotle have studied various constitutions, more than 150 constitution. तो वो 150 constitution किसी ना किसी सिटी स्टेट का संविधान रहा होगा ना, वो कोई आसमान से तो नहीं आ गया था. ओके, सो दैट वो जिस सिटी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन था वो केस था. ऑलराइट, सिमिलरली वी स्टडी और वी ट्राई टू नो, हमने देखा कि टॉकविल अमेरिका गए या फिर कोई ट्रैवलर इंडिया आया. ऑलराइट, इब्न बतूता, एंड देयर वर मेनी पीपल who visited India, who wrote on India. Okay, they have a memoir or travelogue of India. So India was for them a case study. In vacuum there will not be any comparison. Okay, so how we compare?
we compare based on certain cases, case study. So you choose and pick. Okay? Starting from the first lecture कि हमने कहा कि आप डिस्क्राइब करते हो, कॉन्टेक्स्ट डिस्क्राइब करते हो, आप क्लासीफाई करते हो, आप हाइपोथेसाइज करते हो, एंड देन यू प्रेडिक्ट, राइट. दीज 4 थिंग्स करने के लिए sometimes you arrive at some case study, or sometimes the case is given to you, right? But you need these information. Okay, so how you compare based on the cases. Okay, someone has told you, आपको किसी ने कहा है, make a project on the civil society in India and civil society in America. So ये basically case study हो गया ना of civil society in America and India. So now you are given a case to compare. So your job is just to compare following certain tools and methods and techniques and approaches, which we are going to study soon. Okay, but once a case is given to you, then you will make sure that the level of analysis is same, or the unit of analysis is same. Okay, so you are not given, say, write a project comparing civil society in India and government in US, right? सिविल सोसाइटी इन इंडिया और गवर्नमेंट इन यूएस का कंपैरिजन नहीं हो सकता है, या तो कंपैरिजन हो सकता है सिविल सोसाइटी इन इंडिया एंड यूएस, या गवर्नमेंट इन इंडिया एंड यूएस, एंड दैट टू एग्जीक्यूटिव इन इंडिया एंड यूएस. ये 2 चीजें अलग अलग हैं, राइट? सो यूनिट ऑफ एनालिसिस इज सेम once you have case study. So how you compare? First, you ensure that you are given certain cases. Second, you ensure that they have similar unit of analysis. Third thing is that when you begin to compare, or when the task of comparison begins, you must ensure that, or you will very intuitively pick up variables. All right, so remember, cases, unit of analysis, and then variables and observations. Okay, and the fourth would be that after variables you will begin your. Okay. So now come to this variable. Take the previous example that you are given a task to compare the executive in America and India. Now, in order to compare this executive in 2 countries, you will need certain variables, you will need certain factors or parameters on which you will compare. Alright? तो आप देखोगे कि एग्जीक्यूटिव फॉर्म कैसे होता है, फिर आप देखोगे कि हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, फिर आप देखोगे कि मिनिस्टर्स कौन होते हैं, उनके रोल्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं, कितने समय के लिए फॉर्म होते हैं, ओके, पावर्स क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, सबसे कम पावरफुल कौन होता है, ओके, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है या नहीं है, इज इट ट्रांसपेरेंट इन फंक्शनिंग और नॉट, whom does executive report, how can you make executive transparent or accountable, who scrutinizes the executive, right? So there will be various questions around which आप कंपैरिजन शुरू करोगे. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं that will serve as a variable. Alright, variables एक पूरी की पूरी अलग टॉपिक हो सकती है, बहुत तरीके के वेरिएबल होते हैं एक रिसर्च में, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. Maybe if you want, we can have a separate lecture on variables, types of variables, okay, but for now, when you compare, you must know the variables, कि आपके उस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए, उस टॉपिक के लिए क्या क्या वेरिएबल्स जरूरत होंगे. फॉर इंस्टेंस एग्जीक्यूटिव का मैंने बताया, अब आपको किसी ने कहा है कि कंपेयर द जुडिशरी ऑफ इंडिया एंड ब्रिटेन, राइट,
क्या आप वही सारे फैक्टर्स जो एग्जीक्यूटिव के कंपैरिजन में पढ़े थे सेम चीज पढ़ोगे जुडिशरी को के कंपैरिजन में भी? ऑब्वियसली नॉट। इसके लिए आपको कुछ अलग चीज़ें लेनी पड़ेगी, कुछ दूसरी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। जजेस के पावर्स, फंक्शंस, हाउ जजेस आर chosen, till what age they work, is it an independent body, are they even answerable to anyone? Okay, so ना अब आपके questions बदल गए, अब आपके variables बदल गए। सिमिलरली जब आपको पार्टीज पढ़नी है, पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसके वेरिएबल्स बदल जाएंगे, राइट? Therefore, for a comparison, our variables are very much dependent on the kind of case that we undertake, or the obviously the unit of analysis, because based on the units or based on the factors on which we will undertake our study, our variables will change, and so is the observation, right? So इसलिए हम यूएस में पढ़ते हैं कि एग्जीक्यूटिव एक पावरफुल बॉडी, मे बी पार्लियामेंट्री सिस्टम में उतनी पावरफुल नहीं है। So how are we arriving at this conclusion? Because we have chosen those variables which was relevant or which was apt for studying, say, parties or executive. ये जिस तरीके से हमने लिया था उस तरीके से वो केस स्टडी कैसी थी उस बेसिस पर हमने वेरिएबल्स चुना, बट दिस इज हाउ वी कंपेयर। ओके, सो ये दीज आर बेसिकली एक तरीके से in nutshell we can say this is how we compare. But remember, when we undertake comparison, it has specific meaning, and similarly our approaches vary with in all comparisons, alright? इसमें से हम देखते हैं कि कई बार inductive method, deductive method की बात होती। then comes और comparative politics का जो rise हुआ after 1950s, we see behavioral method or positivist method, right? और behavioralism जिसे कहा गया, right? इसके साथ साथ we see, is our study empirical or normative, या both है, okay? Is it qualitative, quantitative? So ऐसे terms you will come across in all kinds of political science. Specifically जब आप comparative politics पढ़ेंगे या political theory पढ़ेंगे या political analysis पढ़ेंगे, remember? And this is very important to understand how we compare. Okay, without understanding all these theoretical underpinnings, it will be very difficult to begin your journey of comparison or understanding, right? So for instance, when we study, और एक एग्जाम्पल जो हम लोग बार बार ले रहे हैं, एरिस्टोटल ने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, ऑलराइट, एंड तब उन्होंने बताया कि ये 6 तरीके के गवर्नमेंट हो सकते हैं। एरिस्टोटल का मेथड क्या था? कोई आपसे पूछ सकता है ना, उन्होंने कैसे बताया, ऑलराइट? तो उन्होंने पहले पढ़ा, एनालिसिस किया, कैटेगरीज बनाए, एंड देन ही अराइव्ड एट अ कंक्लूजन, राइट? तो उन्होंने कुछ स्टडी को पढ़कर बताया कि बेस्ट ये तरीका हो सकता है, राइट? दिस इज हाउ ये जो आपका है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, राइट? सो यू आर डिड्यूसिंग समथिंग by studying many things, okay? आप अपने आसपास बहुत कुछ ऑब्जर्वेशंस कर कर एक बात बताते हो, कि पहले के ज़माने में जब ये इतना साइंस आगे नहीं बढ़ा था, फिर भी पीपल वर एबल टू से कि 2 दिन बाद बारिश होगी या 5 दिन बाद बारिश होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो ऑब्जर्व करते थे सर्टन फिनोमेना को। पर्टिकुलर काइंड ऑफ विंड होता था, डायरेक्शन ऑफ विंड होता था, मॉइस्चर लेवल देखते थे, बर्ड्स के माइग्रेशन पैटर्न्स को देखते थे, एंड और ये कलेक्ट एक ऐसा नॉलेज सिस्टम था जो ने सदियों से उनके नॉलेज सिस्टम में ऐड होता गया,
और उस बेसिस पर वो बताते थे, राइट। सो वो अपने उस नॉलेज, पुराने नॉलेज सिस्टम और अपने नॉलेज सिस्टम में कुछ ऐड कर कर एक कंक्लूजन देते थे, एक आउटकम बताते थे। फॉर दूसरा एग्जांपल, आज तक सबने सिर्फ यही देखा है कि देर आर ओनली वाइट स्वॉन्स, बत्तखें, स्वॉन बस वाइट होती हैं, राइट। वी कैन नॉट से विथ श्योरिटी, some people will say, but the people on this planet have only saw white swans, and that is why we say all the swans are white. Okay? So ये नॉलेज सिस्टम हमारा कैसे बन रहा है? ये इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने वैसा ही ऑब्जर्व किया है। okay? कुछ नया हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा वो कंक्लूजन चेंज हो जाएगा, बट फॉर नाउ दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन, दिस इज द व्हाट वी आर सेइंग। लेकिन ये नॉलेज सिस्टम बन इस बेसिस पर रहा है कि आपने बहुत सारे सॉन्ग्स को देखा जो वाइट था, इसलिए आपने कहा कि अगला सॉन्ग जो भी मिलेगा वो भी वाइट होगा, राइट। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है जो कि एरिस्टोटल इन हिज स्टडी हैव फॉलोड दिस काइंड ऑफ मेथड, जहां पर उन्होंने कहा कि दिस इज व्हाट many constitutions look like, this is what government looks like around the city state that he had studied, और उसके बेसिस पर मैं ये बता रहा हूँ कि बेस्ट ये है, वर्स्ट ये है, राइट। सो ही हैज फॉलोड अ काइंड ऑफ what you can call is डिडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग। उन्होंने डिड्यूस किया, राइट। उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर अपनी फाइंडिंग को डिड्यूस किया। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में वी यूजुअली डू, और इन एनी काइंड ऑफ रीजनिंग वी फॉलो आइदर इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव में वेयर वी अप्लाई one kind of finding to many, all right. So we go from a very particular instance to generalizations, and in other kind of we go from a general example to a particular, all right. So we can have a look at this in detail. Similarly, behavioralism is another method or another tool that evolved in political science, and it has a long lineage in sociology, in social sciences, okay. But remember that all these are essential for comparison. आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें ज़रूरत कहाँ पर है, एम्पिरिकल क्या है, नॉर्मेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या है, क्या इतना डिस्टिंक्टिव या फिर इतना ज़्यादा सेपरेशन रह भी सकता है? इज इट पॉसिबल दैट ऑल काइंड्स ऑफ कंपैरिजन विल आइदर बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव? देयर इज नो थर्ड वे, ऑब्वियसली देयर इज अ थर्ड वे, ओके, मिक्स्ड मेथड कहते हैं लोग उसे। बट हाउ are we going to adopt it in comparative politics? That is important, all right. So while comparing, we must understand these key terms, key terminologies, okay. So if you want, I can have separate lectures on all of these terminologies, okay. So let me know whether you want a separate lecture on all these terminology, including many other terminologies also, all right, okay. So keep these 4 points in mind, that cases are essential, case studies are essential, okay. इसमें से in the next lecture we will look into something called small n large n, okay. ये case study से आता है कि कितने cases आप पढ़ रहे हो. Then unit of analysis is important when you compare, that nature alike होना चाहिए, aspects same होने चाहिए, characteristics, parameters, ये सारी चीज़ same होनी चाहिए जब आप compare करना शुरू करते हैं दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें. Third is you choose variables very carefully, and in different study, different research, there will be different variables, and it will be dependent on cases or the unit of analysis. जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, when you are done with your research, then you come at the observations, all right. So this is how we compare.